पुणे में थे और वो पुणे में फाइल हुए थे। वो अपीयर करने के लिए मुझे बोले कि आप अपीयर भी करना बोले। आई वेंट टू द कमिश्नर। द कमिश्नर वाज वेरी फ्रेंडली एंड ही सेड सर ये 264 क्या है, मैंने आज तक एक्सरसाइज ही नहीं किया, ये होता क्या है। 263 समझ में आता है लेकिन उसके नीचे वाला सेक्शन मैंने नहीं पढ़ा। तो मैंने बताया कि हाँ सर ये बहुत सारे एसएससी और प्रोफेशनल लोग को भी नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, फिर उनको मैंने अच्छा स्टडी मटेरियल दिया एंड ही अंडरस्टूड एंड सेड ये तो बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब इफेक्टिव और रेमेडी होती है लोग उसका मिसयूज भी कर लेते हैं। सो यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस, उसका मिसयूज भी हो जाता है बहुत बार, जिसकी वजह से एडवर्स ऑर्डर्स भी आते हैं। सो एज आई एक्सप्लेन, 264 इज अ वेरी गुड प्रोविजन व्हिच gives an opportunity to an SSC to correct its mistake and seek a remedy. With this caution, let us go back with the appeal provision, because हम appeal में कह रहे थे, यहाँ मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा digress किया, okay? So coming to the appeal provision, so आपको 3 डॉक्यूमेंट आ गए, एक में अपील फाइल करना है, स्टे एप्लीकेशन करना है और पेनल्टी के सामने आपको जवाब देना है। तो आपको जब अपील फाइल करना है, the limitation period is 30 days. In my notes, what has been circulated, I have given a chart where I have given what is the court fees you have to pay, what is the limitation period, what form has to be given. All that is given in a one-pager chart of CIT appeal, ITAT. If you will just go through it, everything will be clear. Wherever I feel controversy, I will put it across. So when you have an appeal, now there are 2 documents in the appeal which you have to go. One is grounds of appeal and one is statement of facts. Grounds of appeal, let me tell you, बहुत बार जब अपील्स आते हैं grounds of appeal, वो पूरा मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है कि मांगना क्या चाहते हैं, मांग क्या है, वो आपकी मांग क्या है, आप चिल्ला तो रहे, नारे तो लगा रहे, बट मांग क्या है आपकी। तो वो grounds should be such that if somebody reads that ground, he should be able to understand what is your issue. Many a times we read the grounds, we don't know what is the quantum involved. वो amount ही नहीं mention करता है, section नहीं mention करता है, and then you have to turn the pages and go to the assessment order to see what under which section that addition has been made. What was the provision which has been invoked? So your ground should be concise and precise. It should not be elaborated. It should not be in an essay form. आप आपकी सारी बहस उस ग्राउंड डाल दो, वो नहीं करना है. The language of yours should be very tenable. However wrong the assessing officer has done, do not use foul language, a language as a professional which is not acceptable. Don't use that language. आपको समझना है जो अथॉरिटी के पास आप रिलीफ मांगने जा रहे हो, उसका भी ईगो मत हट करिए. So this is an art of advocacy. Never hurt the heart of the person is going to decide your matter. Okay? So your language has to be, don't use any unparliamentary language. You can say there was no application of law, but don't use that he didn't have any sense, he has acted without this. So don't use such unparliamentary language. It cannot be accepted. So draft your grounds of appeal to be precise, give heading, give paragraphs, and give. Statement of facts is a very important document which has to go along with your grounds of appeal. बहुत बार statement of facts लोग उसको बना के भेज देते हैं. मेरे experience में statement of facts should contain when your return is filed, who is your SSC, what he is doing since when is the business. मेरे senior डॉक्टर शिवराम के साथ जब भी मैं कॉन्फ्रेंस पे बैठा था, जब when I was a junior, and तो जब भी एसएससी आते थे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ वहाँ ऐसे सर पे क्लाइंट आ गया, सर आ गया कॉन्फ्रेंस करना है, सर घुमा गया. तो मुझे पता रहता था कि सर ने ब्रीफ नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ा है, मेरे को ही लीड करना पड़ेगा ये कॉन्फ्रेंस. सर आते ही ना सबसे पहले वो सीए क्वेश्चन पूछते थे, व्हाट इज योर एसएससी डूइंग. वो कॉन्फिडेंटली बोल देता था एसएससी इज डूइंग लाइक दिस, और साथ में अगर एसएससी है तो वो पूछते हैं यही काम करते, तो बोलते नहीं सर मैं ये भी करता हूँ. फिर दूसरा क्वेश्चन उनका बड़ा खतरनाक आता था, सिंस व्हेन यू आर डूइंग द बिजनेस. ये वो सीए तो कभी नहीं बोल पाता था, तो वो बताते कि मैं बिजनेस इतना पुराना से कर रहा हूँ, कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करते हैं,
आपका ऑडिट कब से शुरू हुआ? सो ये बेसिक क्वेश्चंस जो हैं टू अबाउट द एसएससी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू डोंट नो हु इज योर एसएससी, how you are going to understand his matter. The second thing, you need to understand his business. What is his business? हम बहुत जनरल व्यू बना लेते हैं, अरे बिल्डर है ये कर रहा है, या ये फलाना बिजनेस में है इसका काम ऐसा होगा. नहीं, we should hear the SSC. और अगर आपके कॉन्फ्रेंस में एसएससी आया है तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए, उसकी प्रॉब्लम है उसकी बात सुनिए, उसको क्या कहना है उसके मैटर में उसको थोड़ी देर सुनिए, और फिर उसके बाद आपका मैटर आप प्रिपेयर करें. ये आपको एक अच्छा ग्रिप देगा मैटर में, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रियली व्हाट इज द प्रॉब्लम or what has not been highlighted at the before the assessing officer, or what the assessing officer has missed to consider. So give a chance if the SSC is coming and he wants to explain the case. However general he may talk, and it might be certain time irritating also, some clients are there, but give him some time, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स उसे भरना है और आपकी फीस भी उसे ही देनी है, तो थोड़ा टाइम उसको भी सुनने के लिए दीजिए. वो आपकी मैटर को एक अलग कलर देगा, एक अलग फ्लेवर. Going further, there were, when this provision came of new faceless regime, the appeals were required to be uploaded on the portal, and that's how this grounds and this statement of facts are required to be uploaded as per the portal, whatever is required. There are certain columns which ask you for additional evidence. If there is some additional evidence but you are not sure what is it, so do mention yes, it will be filed at the time of hearing, or mention it in your statement of facts. In your statement of facts, clearly mention what are the notices and what are your replies. If you don't put arguments, it is okay, but put your facts at least. Your facts of the case should be there in the statement of facts. No need to put judgments in the statement of fact. That you can put it at the later stage when you are filing the written submission. But put your facts. What are the notice? What is your reply? What has been failed to be considered by the assessing officer? If he has not given you an opportunity, mention all these things. When you are drafting your grounds, kindly take into consideration opportunity given by the assessing officer. बहुत बार केसेस होते हैं शो कॉज नोटिस पे वो ग्राउंड ही नहीं है, इशू ही नहीं रेज किया है, लेकिन एडिशन हो जाता है. बहुत बार ऐसे केस आ रहे हैं जहां पूरा असेसमेंट हो जाता है, he never questions me, but at the fag end when he is issuing me a show cause notice, वो उसमें एक या दो नया इश्यूज डाल देता है, तो हमारे पास चांस नहीं मिलता उसको रिप्लाई करने का. प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, रेज दीज टाइप्स ऑफ इश्यूज, check these type of issues, put it in your statement of facts in your grounds of appeal. This will help you if you want to raise an additional ground before Commissioner Appeals, or you want to lead some additional evidence. Because additional evidence, there is a rule 46 capital A which gives you certain circumstances only to lead evidence. बहुत बार as a matter of procedure Commissioner Appeals allow कर देते हैं, लेकिन बहुत बार वो नहीं भी allow करते हैं. And only reason is that SSC has failed to show the circumstances that was not available with him to file those documents and details before the assessing officer. So if you have this grounds, this will add a reason why you had failed or you were unable to file those documents before the lower authority. So these छोटे factual aspects पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए while you are filing the appeal. Notice of demand, I say, is a very important document. If you find any mistake in the computation, nowadays 115 double BE आ जाता है, हर जगह वो लोग वो वाला सेक्शन लगा देते हैं, हायर रेट ऑफ टैक्स पे कैलकुलेट करते हैं. So अगर there is some computational error, kindly raise that ground and also file 154 application also. Coming further, ये अपील आपने फाइल कर दी, ये कर रहे हैं, एक कॉलम आता है whether there is a delay or not. If there is no delay, very good. But if there is a delay, then you have to file a condonation application. अब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं बहुत जनरल रीजन दे देते हैं, नहीं मिला था ऑर्डर, हमने नहीं देखा, बहुत ज्यादा हुआ, सीए ने भूल गए या सीए के स्टाफ भूल गए, एसएससी बीमार था, एसएससी वाज ट्रैवलिंग. डोंट डू ऑल दिस. थोड़ा बेसिक रीजंस तो दीजिए. आपको ईमेल पे कम्युनिकेट हुआ, एसएससी के पर्सनल ईमेल पे गया था,
मिस हो गया देखना, you state that, but state some genuine reason. The reason should not be fanciful. In all cases of delay, the Supreme Court tribunal have said that there is certain mistakes. गलती तो सबसे होती है, यहाँ भी हो गई, but merely because it is a mistake, it doesn't empower that the delay should be refused to be controlled. Delay has to be controlled, and the case has to be decided on merits, unless the delay is deliberate, is with a mala fide intention, it was with a intention to evade tax or make the proceeding delay so that some unwanted advantage is taken by the SSC. The depression of the CA is a good reason. Sorry? Depression of the CA. So मेडिकल रीजन आप बोल रहे हैं, तो आपको बोल रहे हैं असेसमेंट ऑर्डर के बाद सीए डिप्रेस हो गया? नहीं, तो वो मेडिकल रीजन हो गया, मेडिकल रीजन हो गया, तो आपको मेडिकल रीजन देना है, लेकिन डिप्रेशन तो क्या आजकल सभी डिप्रेस्ड रहते हैं, बनारस के लोगों को छोड़ के, और हम मुंबई वाले तो सारे डिप्रेस्ड ही रहते हैं। मैं जैसे वहां से निकला, फ्लाइट ऊपर रही और लैंडिंग से मेरा डिप्रेशन दूर हो गया। देखो कोई यहाँ कोई डिप्रेस दिख रहा है? अभी आज सवेरे थे, मैं सोचा यहाँ आएंगे तो शुक्ला जी हमें जलेबी खिलाएंगे, ये करेंगे, तो ये हमें बफे खिला दिए। मैं ढूंढ रहा था रवि से, यार रवि ये तो बफे खिला दिए, मेरे को तो यहाँ की जलेबी खानी थी। हाँ, तो अब शाम को हो रहा है, अब शाम को तो हम सोचे थे कि समोसा कचौरी खाएंगे, अब हमें जलेबी खिला रहे हैं। चलिए मैं कंटिन्यू करूं तो आपके स्वाद पे आ जाएगा, तो आप मुझे नहीं सुनेंगे, आप फिर चले जाएंगे। बड़ी मुश्किल से मुझे माइक तो मिला है, 3 बजे मिलने वाला था, 4 बजे मिला है। सर, तो जो डिले कंडोनेशन है उसके ऊपर आप प्रॉपर कीजिए, पॉसिबल अगर है तो एफिडेविट डालिए। द बेस्ट थिंग इज एन एफिडेविट। If you have a good reason, you file an affidavit along with the supporting documents. आप जैसे मैं बोले कि medical reason sir ने बताया. If you are giving a medical reason, the medical reason is not necessary of the professional. It can be the family member. It can be the family member of the SSC. Kindly enclose the medical certificate, and it should be a genuine. Don't create false evidence. I am very strictly saying, don't never create a false evidence and file it before the officer. जेन्युइनली जो रीजन है ना उसको आप उतारिए पेपर, कोशिश करिए डालिए। अभी मैंने एक मैटर आर्ग्यू किया, एसेसिंग ऑफिसर के सामने रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ, एसेसिंग ऑफिसर के सामने एक्स पार्टी, सीआईटीएफपी डिले, एक्स पार्टी, ट्राइब्यूनल डिले। व्हेन आई आर्ग्यू द मैटर, वो मेंबर मुझे दिख रहे बोले कि क्या करें, हर जगह तो इसका गलती है, आप क्या डिपेंड करेंगे? मैंने बताया सर एसएससी इज अ इलिटरेट पर्सन, उसका जो रिटर्न फाइल किया किसी आईटीपी ने फाइल किया, then he relied on someone and then he put everything in the affidavit and I gave narration word by word, and thereafter he also showed that what his medical problem and what is the case on merits. He was not ready, the bench was not ready to condone the delay. I said, sir, please look at the merits for 1 minute. If you refuse to condone a delay, an illegal tax will be levied on this gentleman who doesn't know. You cannot expect a common mind to understand a complex law of income tax and especially the faceless procedure. आज मैं ईमेल यूज कर रहा हूं, मेरे पास स्मार्टफोन है, मैं दिन भर ईमेल चेक करता हूं। क्या मेरे बाबूजी ईमेल है उनके पास? वो ईमेल चेक करते हैं। स्मार्टफोन तो उन्होंने भी ले लिया, लेकिन क्या ईमेल वो चेक करते हैं? There were people who doesn't have the email IDs and they rely on the email ID of the professional. There is quite possibility and there can be a gap which is there. So kindly bring all these points in your affidavit, in your application for condonation. Your condonation application should not be in that column 2 lines. Separate condonation application, separate documentation of that should be uploaded with the appeal. Sir, one question, sir. Yes, sir. There are a large number of cases. These are very new provisions, faceless provisions, and most of the people in India are not aware of the computers or net or income tax. Yes. So, particularly in case of official towns or smaller towns, assessments are made
the assessee is not aware, villagers or some small businessmen, they come to know after a few years when the attachment is done. So in such cases, when he comes out with a petition for condonation, I have seen cases where it has been refused. You have come after 5 years. That is not fair. So sir, in my notes what I have circulated, in that there are various decisions and I have listed out the principles which are curled out from the decision. One of the legal principle in matter of condonation, the court has never to see the length of the delay. The length of the delay is not a matter which has to be considered. What needs to be considered is the sufficient cause, whether it is reasonable or not. The second thing which I said in the matter of condonation, it is not the mistake which has to be seen. What has to be seen? The intention. If these things have been taken care in your application, I see no reason why the delay should not be considered. And sir, one point what you just pointed out, there is also a decision which is pointed out, it is the latest decision of 2026, Ramesh Lalawat, which is mentioned in my note, where it says specifically that he was a small trader with limited literacy and no exposure to technology. He was not aware of the impugned assessment order passed, which was sent via electronic communication, for which he does not have the access, know-how to operate the same. So there are cases you use those depending on facts of circumstances, but don't use general way. Judgment को एक साइंस का फॉर्मूला नहीं होता कि उसको आप हर केस हर सिचुएशन में लगा दीजिए. Judgment has to be read depending on facts and situation, and the ratio of the judgment has to be applied. बहुत बार जजमेंट के हेड नोट हम टैक्समैन में से ले लेते हैं, वो मत करिए. जजमेंट को एक बार पढ़िए और फिर उसको अपने फैक्ट्स पे लगाइए. या कब यूज करिए जजमेंट मैं बहुत बार देखता हूँ सबमिशन में जजमेंट ही जजमेंट कोड होता है, वो मत करिए. केयरफुली यूज करिए, दो यूज करिए, एक यूज करिए जो डायरेक्टली आपको एग्जीक्यूट करे. So on this point, let's move to the second point. One of the provision is section 249 subsection 4. What it says, the admitted tax liability needs to be paid when you are filing the appeal. You have to be very careful when you are mentioning this column. अभी एक केस में आपको एक एग्जांपल देता हूँ. SSC ने रिटर्न नहीं फाइल किया because he was under the belief that there is no taxable income. He didn't file. SSC ऑफिसर ने उठा के 2-3 करोड़ का एडिशन कर दिया. मैटर अपील में गया. He said that where have you paid the admitted tax? There is a provision under section 249(4), subclause B, talks about a situation where no return has been filed and thereafter the assessment has been made. The SSC was liable to pay that amount as if the return if would have been filed, this tax was payable. तो 2 करोड़ का एडिशन भर दिया, उसके ऊपर टैक्स भरे, फिर अपील फाइल करे. प्रोवाइजो है उसके नीचे. प्रोवाइजो बोलता है कि अगर एसएससी को लग रहा है कि टैक्स नहीं भरना चाहिए था, तो वो एक एप्लीकेशन कर सकता है कमिश्नर अपील का, व्हाई ही शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस प्रोविजन. यू हैव टू बी केयरफुल. इफ दैट इज द सिचुएशन, काइंडली फाइल सच एन एप्लीकेशन और टेक अ प्ली. देयर आर केसेस वेयर द कमिश्नर अपील हैज डिसमिस्ड द अपील without even issuing the notice on the ground your appeal is not maintainable. Why? Because of section 249 subsection 4 clause B. So be careful of that. क्या होगा, एक अपील जाएगी ट्राइब्यूनल में, ट्राइब्यूनल से फिर आप कुछ बोलेंगे कि ये है, फिर मैटर नीचे रिमांड आएगा. So kindly take this point when you are filing and drafting your appeal. There is a direct decision of this of Mumbai Tribunal in the case of Messrs. Amanna Sharif, which is reported in 176 taxman.com 112. It is all this is mentioned in the note, so need not bother to write. You can just go through this. Can an appeal be signed by an advocate, chartered accountant, authorized? Answer is provided you have a specific authority for that. Your authority which you receive from your client to represent the matter is not the authority for signing the memo of appeal. So kindly do not misunderstand that authority while filing the appeal. It is advisable always that you take the signature of the client. Going further, defect in appeal. If there is a defect in appeal, can an appeal be dismissed?
Answer is no. The authority should intimate you to remove the defect, and then only after you will get an opportunity to remove the defect, and thereafter you should proceed. He cannot directly reject your application for defect. Hearing. Now in a faceless proceeding, when a hearing notice is received, मैं बता रहा हूँ अनगिनत केसेस है. मैं पिछले 3 महीने में कम से कम 10 से 15 केसेस किया होगा जहां नोटिस आती है, there is no submission filed, and the ex parte matter is decided. It is unwanted litigation. You go to the tribunal send it back. 3 notices, max 3 notices they are sending, and thereafter they will dismiss your case. कोई केसेस में 4 हो सकते हैं या 5, बट उसके आगे नहीं ऑर्डर रुकेंगे, आपका डिसमिस करेंगे. You have to be very careful when you are giving your email ID. If you are giving your email, check the portal. What is your email ID? What is your phone number which is given? Because all communications are on email. Portal you might not be visiting every time. So your email has to be very precise. So kindly be careful when you are mentioning the email. When you receive a notice and when you are preparing your matter, I think so, don't be in hurry. First is that you should understand, after you appreciate, prepare a paper book of documents. Put an index, do a proper numbering, and upload this paper book before the portal. Once you upload this, thereafter you file your written submission. If there is some additional document, additional evidence, make a separate application. Mind it, there is a section, there is a rule 46A, which requires you to make a separate application. Why these documents are required in the matter, why you have missed to file, and file this additional evidence along with this application separately in your proceedings. Next, if you feel that the notice you require a hearing, kindly do mention in your application that you require a hearing in the matter. This is an opportunity which is required. If you don't ask, he is not obliged you to give a hearing notice. So if you want a hearing notice, do mention that you want a video conference in the matter, and kindly provide a video conference in the matter. If you are filing partial details, then do mention that partial details are there and you are filing some. If you have additional ground, file a separate application for additional grounds also. If you are relying on certain case law in faceless regime, kindly make copies and upload it separately. So do all these things during the course of hearing. Now there is a grievance which is raised that हमारी hearing नहीं आ रही है बहुत बार. There is a circular which is issued by the board dated 19/3/2024. Circumstances when you can ask for early hearing of your appeals. If you are a senior citizen, if your demand is more than 1 crore, if there are certain directions issued by the court, there is some genuine hardship. In such a circumstances, you can make an application to the principal commissioner and request him that your appeal may be taken up out of turn or expedite the matter. Senior citizens के लिए ये सब कर सकते हैं, super senior citizens. All these points you can raise and you can file it asking why your matter should be taken up earlier. Additional evidence I have explained you. The additional ground I will have explained you. Whenever additional evidence is filed, the commissioner appeal has to send the matter to the assessing officer seeking a report. Sir, time कितना है मेरे पास? है? अच्छा, I will just go hurriedly on some points. काफी वैसे तो but we are going to have one more session and NEC meeting in between. Okay, so I will just like to 5 minutes. 5 minutes. Okay. So going further, अगर आपको एडिशनल क्लेम लेना है, आपने कोई क्लेम था भूल ही गए, ग्राउंड ही नहीं लिए, ग्राउंड नहीं क्लेम है, okay, you have missed something in your life. Can you make? Yes, you cannot make a claim before the assessing officer unless you file a revised return. But before our appellate authorities, you can raise an additional claim. There is a contrary decision of Boards India, but that is applicable only to the powers of the assessing officer. The appellate authorities are not bound by it. There are direct decisions of this, and specifically the Bombay High Court, after considering Boards India, have passed an order in the case of Prithvi Share Brokers, where it says that the power is there with the appellate authority to take and look into your additional claim. Powers of CIT appeals. CIT appeals के पास आपको stay grant करने का भी power है, depending on region. Like in Mumbai, the powers for granting stay is vested with the principal commissioner.
But at other locations, the power to grant stay is vested with the CITP. There are circulars to that effect, judgments to that effect. When you are filing your application, kindly point out the case on it. Why 20% also you should not pay. Give your financial position, and thereafter you file your stay application. Just don't file your stay application saying that I have filed appeal to stay the matter. This is not a law that just because the appeal is you have filed, a stay has to be granted. That cannot be done. So explain your case in detail. There is a very drastic provision which is called power of enhancement. बहुत बार लोग ऐसे ही फाइल कर देते हैं अपील, कोई एडहॉक डिसअलाउंस हुआ, बोले नहीं अपील फाइल करेंगे हम इतना भी टैक्स नहीं भरेंगे। याद रखिए कमिश्नर के पास पावर है एनहांसमेंट का, आपका अगर 10 रुपए का हुआ है वो 20 भी कर सकता है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एनहांसमेंट। You have to be careful when you are going in CIT appeal. What are you filing? What is your claim? What documents you are relying? Many a times if the CIT appeal has a bad experience with you or something is there, he will can issue an enhancement notice. Enhancement notice has to be issued if the commissioner appeal wants to enhance your income. So this is the power of the commissioner appeals to enhance your income. Power of CIT appeal finding and direction can be only in respect of the appeal matter which is there before it. It cannot be in regards to in general for other assessment years or for other assessments. With this, as far as the CIT appeal is there, it is concluded. Let me just 2 minutes for IT. When the CIT, because you are there before now, CIT appeal passes an order. The time limit for filing an appeal before the ITAC is 60 days. You have to file an appeal from the date on which the order is communicated to you. The appeal has to be filed in form number 36. In case you have won the appeal and the department files an appeal, you have an opportunity to file a cross objection by filing form number 36A, which is within 30 days from the date on which you got the notice from the department about the appeal being filed. आपने ये भी मिस कर दिया तो आप देखते हैं इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल रूल्स में एक रूल है रूल 27 जो कहता है कि द रेस्पोंडेंट कैन आल्सो फाइल एन एप्लीकेशन एंड एजिटेट अ पॉइंट व्हिच हैज बीन डिसाइडेड अगेंस्ट हिम बाय द कमिश्नर अपील्स। सो रूल 27 का भी आप यूज कर सकते हैं, बट दिस कैन बी यूज्ड ओनली टू सपोर्ट द ऑर्डर। यू कैन सपोर्ट व्हाई this order cannot be sustained even on this ground which was there before the commissioner, but he has decided against. I have not come up in appeal for following reason. So that is also a power which is there before the tribunal. Also the same rules as far as drafting of your grounds of appeal, filing your paper book and hearing is there. When you are going before a tribunal, you have to be very crisp, to the point. You cannot have a general way of arguing because the members are very sharp. They will like to go directly to the point. So prepare a brief notes, if possible, a synopsis of your matter of dates and events. What is your point to be argued and what are the decisions you are going to rely. File it before the tribunal in advance or at least at the time of hearing. The tribunal has the power of granting stay for which you have to file an application beforehand. The stay application are being fixed and you have to argue why the stay has to be granted. If your stay is granted, your matter will be listed as a stay granted matter first on board and it cannot be adjourned. Mind it, before the tribunal when you go, it is not a matter where you will ask for adjournment and they will grant. So whenever you are going, be ready with that and see that your matter will be disposed of on that. Unless you have a genuine reason, the tribunal will not adjourn your matter. With this, friends, I have tried to touch upon some of these issues which are there in filing of the appeal before the tribunal, hearing, as well as I have touched upon the ITAT procedure also for filing the appeal. More or less, these are very effective. As I said, tribunal is the last fact-finding authority, and more than 80% of these orders of ITAT are accepted by the SSC as well as by the department. So this is a final fact-finding authority before the tribunal, and High Court is also very slow in entertaining any appeal filed either of the parties before the High Court. So thank you, friends. Thank you for giving me this opportunity and being presented before you. Thank you for giving me a patient view. Thank you very much. Any questions from the floor? We will take 2 or 3 questions.
Give him the mic. Give him the mic, please. बोलो जोर से बोलो. माइक दे रहे हैं सब माइक दे माइक लेके जा रहे हैं ये देखो लेके जा रहे हैं हमारे एसएससी ने हमारे एसएससी ने एक फ्लैट बुक किया और उसका जो उनसे एग्रीमेंट हुआ टाइम टू टाइम उसका इंस्टॉलमेंट हुआ और वो फ्लैट देने से मुकर जाने पर लगभग हम 50 लाख पेमेंट कर चुके हैं और पेमेंट करने के बाद वो फ्लैट देने का कुछ रेट बढ़ गया, उसके वजह से उनको फ्लैट देने से मुकर गए। फिर बाद में हमारे आपस में कंप्रोमाइज हुआ, वो पैसा हमको दिए, तब तक लगभग 1 करोड़ की लोग हो गए। 50 लाख तो हमको दिए, जो हम दिए थे उससे 10 लाख बढ़ा करके लगभग। तो क्या वो इनकम क्या, वो पैसा हमको रिसीव मेरा ही पैसा दिया हुआ है, हमारे एसएससी ने दिया है, जो फ्लैट के लिए बुकिंग किया है, तो पैसे का क्या होगा, वो हमारी इनकम होगी कि क्या? देखिए 50 लाख जो आपका मिला वो तो आपका ही पैसा आपके पास आ गया। जो 10 लाख रुपया मिला, आपने बोला कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ। नाउ इट डिपेंड्स ये कॉम्प्रोमाइज कहाँ हुआ। आपने इंटरनली कॉम्प्रोमाइज किया, कोर्ट में कोई सेंटम फाइल किया, you were before which court that your compromise has happened. If the compromise is silent, the builder will always treat it as an interest and he will deduct TDS also. There is a direct Bombay High Court decision where it says that on such type of payment, though the builder has deducted TDS, but it is not an interest, because interest का definition है Income Tax Act में, जो बोलता है what is interest, 2 subsection 28A, which talk about interest is something which is given as a debt. इंटरेस्ट जब हम किसी को बोरोइंग्स होते हैं जो इंटरेस्ट देते हैं वो इंटरेस्ट होता है। ये जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है वो आपने कोई उसको लोन नहीं दिया, ये तो आपने उसको पैसा दिया था एक फ्लैट लेने के लिए। इंटरेस्ट इज अ कंपोनेंट, इट इज अ मीडियम ऑफ गिविंग द रिटर्न मनी बैक। आप दो तरीके से, आपके पर्टिकुलर केस में कोर्ट अगर होता तो 2 तरीके से आपको वो एडिशनल अमाउंट दे सकता था। एक तो दे सकता था कि भाई स्टैंडर्ड अगर ये पैसा आप बैंक में रखते थे तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था। दूसरा है कि इस प्रॉपर्टी की कीमत अभी बढ़ गई है तो कितने परसेंट से बढ़ गई है उतना बढ़ा के आपको देता था। ये 2 मीडियम है या माध्यम है जिससे आपको वो एडिशनल अमाउंट होता था। मेरे अंडरस्टैंडिंग में इफ योर ऑर्डर इज ऑफ, देयर इज नो ऑर्डर ऑफ कोर्ट व्हिच मेंशंस दैट ये जो एडिशनल अमाउंट है वो कॉम्पनसेशन है, ये अमाउंट को भी आप कैपिटल गेन में डाल के ऑफर कीजिए। मेरे हिसाब से अगर आप इंडेक्सेशन एक्सेट्रा वर्क करेंगे तो कोई टैक्स नहीं आएगा, तो क्या पता है 50 लाख है और 10 लाख है, आपको कैपिटल गेन नहीं आएगा। और अगर आएगा भी तो बहुत ही कोई छोटा और मामूली म्यूचुअल कॉन्सेंट से पेमेंट हमको मिला है आपस में, जो हम तो आप कैपिटल गेन करिए ना। देयर इज डायरेक्ट डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दैट इवन इन एन एग्रीमेंट towards a capital is a capital asset. A right which you have in an agreement is also a capital asset. So what right you created by taking the allotment of the flat, by making a payment of 50 lakhs is a right, it is in your favor and it is a capital asset. On surrender of your capital asset, what you have received is nothing but capital gain. Capital receipt not liable to be taxed unless and until you don't have an order, don't buy unwanted litigation. और थोड़ा सा समझदारी से कंप्यूटेशन करेंगे तो मेरे ख्याल से टैक्सेबल नहीं आएगा। तो दूसरा चीज ये पूछना था सर, आप उसमें जो कह रहे थे कि एग्रीड असेसमेंट है, यदि पार्टनरशिप फर्म है, एक सज्जन 2 पार्टनर है, एक एग्रीड कर लिया दूसरा वहां नहीं था, वो क्या उसमें 263 में तो हम जा सकते हैं? 263 डिपार्टमेंट के लिए है, आप 264 260, लेकिन 264 में जाएंगे तो भी अगर इंटरनली घर में ही डिस्प्यूट है तो डिपार्टमेंट क्या करेगा उसमें? आपको समझौता कराकर फिर आप 264 में कमिश्नर के पास जाइए, या तो एक आदमी कुछ और बोलेगा, दूसरा और बोलेगा, लिटिगेशन होगा। एज अ ऑफिसर और एज अ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं ऑफिसर की जगह पे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एग्री हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। So ऐसे केस में डिपार्टमेंट will always take a neutral stand to recover the tax rather than to give you some benefit. So बेहतर रहेगा कि आप कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए और उस अंडरस्टैंडिंग को रिकॉर्ड पे लाके फिर आप कोई अथॉरिटी के पास जाए। वो जो सर ऑर्डर जो 64 के कमिश्नर करेंगे
मान लिया हमारे खिलाफ भी केसेस वो अपीलेट है नहीं, मैंने बताया 264 के सामने अपील नहीं होता। 264 के सामने आप रिट पिटीशन जा सकते हैं। तो आप 264 जब भी एक्सरसाइज करें, बहुत सोच समझ के एक्सरसाइज करें। डोंट एक्सरसाइज इन जनरल। लोगों को लगता है ये शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन शॉर्टकट नहीं है, वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो बहुत सोच समझ के एक्सरसाइज करिए। जैसे कि मैं एक केस में अभी 264 हमने एक्सरसाइज किया है, जहां गलती से रिटर्न में एक इनकम प्रोविजन था और गलती से उन्होंने ऑफर कर दिया। अब वो डिपार्टमेंट बोला कि आप 139(9) में वो रिटर्न को रिजेक्ट कर दिए, ये बोल के कि आपने ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगाया। वो जब 143(1) में जब शो कॉज आया था, नोटिस आया था, एसएससी ने जवाब दिया दिस इज नॉट अ रेवेन्यू income, it is a provision and therefore I am not liable to a audit under section 4480. but उन्होंने एक लाइन में लिख दिया your explanation is not acceptable, return is treated as invalid. इस ऑर्डर के सामने हम 264 गए और 264 में उसने बोला yes the 143(1) में उन्होंने ऐसा कर दिया, this aspect has not been looked into it, this needs to be restored to the assessing officer to decide the case on merits whether there was some wrong mistake in the return or not. तो certain class of cases में ये चीज को एक्सरसाइज कीजिए। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि this is a very interesting provision and it is a heart of the income tax act because ये benefit दे रहा है एसएससी को जहां गलती हो गई है, and also it is based on the equity principle which is laid down under article 265 of the constitution. It says that no tax should be levied or charged without authority of law. मेरे मिस्टेक पे गवर्नमेंट कभी फायदा नहीं करना चाहिए, ये लॉ का प्रिंसिपल है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Any more questions? सर देखिए में टाइम बहुत छोटा होता है, डिटेक्ट हो जाती है। जज के पास टाइम 1 मिनट का होता है, पास किया होता है। ट्रिब्यूनल में भी इतना ही होता है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। सर वही तो एडवोकेसी रहता है कि 1 मिनट में जज को समझा दे। थैंक यू Sir, 2 more minutes. I would request Sarvesh Chaudhary sir and Lakshman Singh sir to please honor Vishal Sharma, Vice Chairman with Angus and Momento. If he is here. अरे कोई एक जन भी आ जाइए, नाम लेके Please honor Vishal Sharma sir with Angus and Momento. Would like to conclude something? Arvind Shukla sir, please vote of his hands. Without wasting any more time, we have just been through a very mesmerizing session and a very detailed analysis of appellate work by the addressing advocate from Bombay. We would have loved to have a much longer session and learn more from you, but the time constraints are there. So thank you very much for whatever you have said, and I thank everybody on the dais, especially our chairman Mathur Sahab and others. Also the patient audience who have given a very nice patient hearing to this session. Thank you very much. Thank you. थैंक यू सर। आप लोग जाइएगा कहीं मत, हम एक अपील से निकले और दूसरी अपील में जाने वाले हैं। डायरेक्ट बात होगी जब हम इनडायरेक्ट पे बात करेंगे। स्पीकर धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी इंजीनियर, और उससे पहले कि ये सेशन खत्म हो, मैं अनिल माथुर सर से निवेदन करूंगा कि हमारे एमओसी ट्रस्टी को मोमेंटो के रूप में अपना आशीर्वाद दें, और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए पूरे सेशन में। और ये अभी जो स्पीकर सर ने जितनी भी बातें बताई हैं वो सारा रिटर्न फॉर्म में तो हमें मिल गया है, उसको ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। ये बहुत सारी चीजें, बहुत काम की थी, बहुत अच्छी बातें, बहुत सिंपल सी बातें, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से सर ने बताई। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेशन।
जो प्रोसीडिंग्स ऑफ अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी एंड इट्स कंप्लायंसेस अंडर लॉज। नहीं सर, वैसे ही पकड़ने के लिए कह रहे। चलिए, हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट चल रहे हैं, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ मंच पे सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन के लिए एडवोकेट स्नेह वर्मा जी को कि वो मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। स्नेह वर्मा जी, जैसे ही स्नेह वर्मा जी। स्नेह कहाँ गया? जीएसटी बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी एडवोकेट शशिकांत शुक्ला जी से निवेदन है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हम फॉर्मेलिटीज को जल्दी से खत्म करेंगे ताकि हम सब्जेक्ट पर सुन पाएं। कॉन्फ्रेंस को चेयरमैन असीम जफर जी से निवेदन है, कृपया मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। असीम जफर जी। सेक्रेटरी नॉर्थ जोन एएफटीपी विकास वत्स जी से निवेदन है, कृपया मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। सेशन को चेयरमैन एडवोकेट अंजना सिंह जी से निवेदन है, कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अंजना सिंह जी। सेशन को चेयरमैन एडवोकेट शरद त्रिपाठी जी से निवेदन है, कृपया मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। और सेशन के स्पीकर श्री धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी से निवेदन, और आपके निवेदन है तालीम के साथ धर्मेंद्र जी का स्वागत करें और इन्हें मंच पर सुशोभित कराया जाए। और लास्ट में सेशन चेयरमैन एडवोकेट पंकज घिया सर, वो आ रहे हैं हमारे बीच में। सेशन चेयरमैन पंकज घिया जी अभी हमारे बीच में आ रहे हैं। और इनॉग्रल सेशन में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब ने बताया था कि थाउजेंड्स से भी ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, यानी कि जो जीएसटी एक्ट है वो तो इतना सा है धर्मेंद्र सर, जीएसटी एक्ट इतना है और अमेंडमेंट्स इतने हो चुके हैं। नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, काउंसिल मीटिंग के डिसीजंस, ऑफिस ऑर्डर्स, देयर आर लॉट्स ऑफ वे कि जो एक्ट था वो तो कहीं खो गया है। अब सारी चीजें सर्कुलर नोटिफिकेशन के बिहाफ पे चल रही हैं और वो लिटिगेशन शुरू होता है सेक्शन 61 से। पहले 61 आएगा, फिर आपका 65 ऑडिट, 66 स्पेशल ऑडिट, 67 सर्च सीजर, फिर 73 इवेजन फ्रॉड एंड ऑल, फिर 74 और अब 2024 से 74A। इतनी सारे स्टेजेस के बाद अगर आप पार नहीं पा पाए तो अपील की नौबत आती है, और अगर वो नौबत आती है तो उस नौबत से हम कैसे निपटेंगे और कितना इफेक्टिवली, कितना लीगली, कितना लॉजिकली हमको अपनी अपील को फाइल करना है, ये सारी टेक्निकलिटीज आज हम अपने स्पीकर से यहाँ सुनेंगे और सीखेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ फॉर्मेलिटीज, मैं जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ समय बचाने के लिए कृपया वो मंच के पास आ जाएं। अंकिता जी, अग्ना कुलकर्णी जी कृपया मंच के पास आ जाएं। अंकिता जी और अग्ना कुलकर्णी जी। अरे शरद जी चेयरमैन है, वहाँ जाइए, चेयर पे जाइए, चेयर पे जाइए। पंकज जिया जी, अच्छा वही आशुतोष जी से निवेदन है, आशुतोष जी और मानस जी से निवेदन है कृपया मंच के पास आ जाएं। और आज के स्पीकर श्री धर्मेंद्र जी को अंगवस्त्रम और मोमेंटो देकर के उनका जल्दी से सम्मान करें, अच्छा सा सम्मान करें ताकि वो अच्छा ज्ञान हमको दें। जितनी जल्दी आप सम्मान करेंगे उतनी जल्दी ज्ञान शुरू हो जाएगा। अंकिता जी, अग्ना कुलकर्णी जी, अगर मेरी आवाज सुन रही है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं पुनः आप ही दोनों लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे सेशन के को चेयरमैन एडवोकेट अंजना सिंह जी को मोमेंटो और अंगवस्त्रम देकर के उनका सम्मान करें। आशुतोष जी से और मानस जी से पुनः निवेदन है कि सेशन को चेयरमैन अंजना सिंह जी को अंगवस्त्रम और मोमेंटो देकर के उनका सम्मान करें। अर्चित पांडे और श्रीहर्ष सिंह जी, अर्चित पांडे और श्रीहर्ष सिंह जी उपस्थित हैं? अगर नहीं है तो मानस जी मैं पुनः आप ही को आमंत्रित करता हूं। आइए सर, हमारे सेशन को चेयरमैन शरद त्रिपाठी जी को अंगवस्त्रम और मोमेंटो देकर के उनका सम्मान कर दीजिए। सब आपके
मैं पुनः आप ही दोनों लोगों से निवेदन करूंगा, आशुतोष जी और हर सिंह जी से, कि कॉन्फ्रेंस को चेयरमैन एडवोकेट असीम जाफर साहब हमारे बीच बैठे हैं, कृपया इनको भी मोमेंटो और अंगवस्त्रम दे करके आपका सम्मान करें और इस सम्मान की प्रक्रिया जल्दी से आगे बढ़े। काशीनाथ त्रिपाठी जी और विपिन शंकर जी हैं हमारे बीच में, काशीनाथ सिंह जी और विपिन शंकर जी। काशीनाथ त्रिपाठी जी, आपसे निवेदन है कि मंच पर आ जाएं और सेक्रेटरी रोजाना या एफटीपी विकास वस्त्र जी को अंगवस्त्रम और मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें। मानस श्रीवास्तव जी और राजेश श्रीवास्तव जी, हमारे सेशन चेयरमैन पंकज भैया सर आ गए, सर आपका स्वागत है मंच पर। राकेश श्रीवास्तव जी और पूजा तलवार जी, राकेश श्रीवास्तव जी और पूजा तलवार जी नहीं है। मैं जमुना मैडम से निवेदन करूंगा कि जमुना मैडम, सीए जमुना शुक्ला जी और संजय वर्मा जी से निवेदन है, संजय वर्मा जी और जमुना मैडम से निवेदन है कि पंकज भैया जी को मोमेंटो और अंगवस्त्रम देकर के उनका सम्मान करें, हमारे सेशन चेयरमैन। संजय वर्मा जी और जमुना मैडम से निवेदन है कि ठीक मानस श्रीवास्तव जी, राजेश श्रीवास्तव जी, आपसे निवेदन है कि जिसकी बात सेक्रेटरी शशिकांत शुक्ला जी को मोमेंटो और अंगवस्त्रम देकर के उनका सम्मान करें। और आनंद पसारी जी नहीं है इस समय, सतीश गुप्ता जी और सुरेश चौबे जी हैं, सतीश गुप्ता जी और सुरेश चौबे जी से निवेदन है कि स्नेह वर्मा जी, अवधेश जी से निवेदन है कि स्नेह वर्मा जी को अंगवस्त्रम और मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें। और नेक्स्ट ऑन एजेंडा एड्रेस बाय सेक्रेटरी नॉर्दर्न विकास जी। हाँ मैं सेशन चेयरमैन को हैंड ओवर कर रहा हूँ, सर आप ओपन कर दीजिए सेशन को, फिर उसके बाद ये चलता रहेगा। क्या हो गया? जिस शख्स ने सबका सम्मान कराया है और सुबह से जो यहाँ पर सबको बुला रहा है और जिस तरीके से इन्होंने आज उदाहरण दिए हैं, उस मेरे को अभी भी है याद है कि कोई प्रेजेंट था और कोई नॉन प्रेजेंट था, तो इन्होंने कहा वो आदमी मानसिक रूप से यहाँ प्रेजेंट है, तो हम फिजिकल रूप से जो प्रेजेंट है दिलीप यशवर्धन जी, इनका सम्मान करते हैं और बहुत बहुत इनको धन्यवाद देते हैं। साथियों, आज का जो टॉपिक है जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है। जीएसटी जब से आया है हम अपील्स को देख रहे हैं और फर्स्ट अपील जो होती है वो बुनियाद होती है। अगर आप कई बार कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज जो होती है एचसीएन के बाद जब रिप्लाई फाइल करते हैं, तो वो स्टेज होती है जहां पर आपको सारे अपने ग्राउंड्स लेने चाहिए, जहां पे लीगल सबमिशन लेने चाहिए, फैक्चुअल एस्पेक्ट क्लियर करने चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगह नासमझी के कारण या भूल चूक के कारण या जानकारी का अभाव होने के कारण हम कुछ ग्राउंड्स ले नहीं पाते और एडजुडिकेशन ऑर्डर हो जाता है। अब जब एडजुडिकेशन ऑर्डर हो जाता है तो उसकी नेक्स्ट रेमेडी है अपील। और जब सेक्शन 107 में हम अपील करते हैं उस समय हमको जो ग्राउंड्स लेते हैं वो ग्राउंड्स ऊपर तक जाते हैं, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए, अभी श्रीवास्तव साहब समझाएंगे कि ग्राउंड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने जीएसपीएटी का प्रोसीजर देखा हो तो आपको एडिशनल ग्राउंड्स लेने के लिए भी आपको एप्लीकेशंस लगानी पड़ेगी।
ये भी सेटल्ड लॉ है कि पॉइंट ऑफ जुरिस्डिक्शन गोज टू द रूट ऑफ द केस, और वो ग्राउंड कभी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेज से समझ के तैयारी करके लेंगे वो हमेशा अच्छा होता है। लेकिन अगर जुरिस्डिक्शन का ग्राउंड नहीं और फैक्चुअल ग्राउंड है या लीगल इंटरप्रिटेशन का ग्राउंड है, और अगर आपने फर्स्ट स्टेज पे नहीं लिया तो कई बार कुछ हायर कोर्ट्स उसको अदरवाइज ले लेती है और कई बार उसको एंटरटेन करने के लिए मना भी कर देती है। तो अपील जब हम करते हैं, अपील एक सिंपल प्रोसीजर नहीं है, अपील एक सिंपल रिप्लाई नहीं है, अपील एक सिंपल एप्लीकेशन नहीं है। अपील एक ऐसी चीज है जो आपको हर तरीके से समझ के और फ्यूचर एस्पेक्ट्स को सोचते हुए सारे फैक्ट्स और ग्राउंड्स आपको लेने चाहिए, और उसमें जो लीगल पॉइंट्स है, लॉ पॉइंट्स है, उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग दो डिफरेंट चीज है। प्लीडिंग की इंपॉर्टेंस जब आप ओरल प्लीडिंग्स करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, वो अलग है। लेकिन अगर प्लीडिंग अगर आपने अपील में नहीं ली तो कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम जब हाई कोर्ट्स में या ट्राइब्यूनल्स में आर्ग्यू करते हैं तो वहां पे यही प्रॉब्लम आती है, अच्छा आप बताओ यहाँ पे ग्राउंड में कहाँ लिखा है आप जो आर्ग्यू कर रहे हैं, और हम ग्राउंड पलटते हैं उसमें कहते हैं सर ये देखो इसमें लिखा है ऑल अदर प्लीडिंग्स, या ऑर्डर इज विदाउट जुरिडिक्शन, विदाउट जुरिडिक्शन में सब कुछ आ गया, तो वो माने नहीं जाते। कई बार वी लूज गुड केसेस बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्लीडिंग्स, बैड प्लीडिंग्स और इनकम्प्लीट प्लीडिंग्स। उसको ज्यादा एक्सप्लेन दरविंद जी करेंगे। सेकंड पॉइंट मैं खाली एड्रेस करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा इशू आ रहा है लिमिटेशन का। 90 डेज की लिमिटेशन है, फिर 30 डेज का एक्सटेंशन है, उसके बाद क्या? सुप्रीम कोर्ट का ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का केस है जो ये कहता है कि एक्सटेंशन नहीं हो सकती। कॉन्ट्रेरी व्यू चल रहे हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स के कि नहीं हो सकता। अब आप सोचिए अगर कोई ऑर्डर आया 4 महीने में, अगर आपने ऑर्डर देखा नहीं तो क्या होगा? वो डिमांड कंफर्म हो गई। आप रिट में जाओ, वो कहेंगे आप सोचते रहे, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, यू डोंट हैव एनी राइट टू इन्वोक आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो रिट में भी एंटरटेन नहीं कर रहे। लेकिन अभी कुछ कॉन्ट्रेरी जजमेंट्स भी हैं, जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट है, मद्रास है, वो कह रही है। अभी मैंने परसों ही राजस्थान हाई कोर्ट से एक ऑर्डर कराया मेरे केस में, उन्होंने कहा है कि अगर लिमिटेशन के बाहर भी है तो उन्होंने अलाउ किया है कि आप 15 दिन में अपील पेश कर दो, एंड वी अलाउ द कंडोनेशन एंड द अपीलेट अथॉरिटी विदाउट डिले को क्वेश्चन करे हुए उसको मेरिट पर डिसाइड करें। बट वो एक्सेप्शनल केस है, रिट में जाने के लिए भी पैसे लगते हैं। रिट रेमेडी इज नॉट चीप, और हर असेसी नहीं ले सकता। आज कोई आदमी आता है, कोई लिटिगेशन करता है तो सबसे पहले ये पूछा जाता है क्वांटम क्या होगा, कितने की डिमांड। अपील के लिए भी क्वांटम को उनको देखना पड़ता है, कितने की डिमांड। कई लोग तो बेचारे 10% भी अपील का जो है वो बोगस बिल के जो केसेस आ गए, वो आप एक्सप्लेन करेंगे, उसमें 10 करोड़ की डिमांड हो गई टैक्स की, खाली बोगस बिल पे। अब उसको अपील करने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, 1 करोड़ रुपया आएगी तो क्या करेगा? उसका राइट ऑफ अपील खत्म हो गया। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक में ऑर्डर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे केस में उन्होंने 10% को 5% कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए भी पैसा चाहिए। लिटिगेशन इज वेरी कॉस्टली। एंड आज का जो कॉन्सेप्ट लिया, आज का जो टॉपिक लिया अपील, अब हम सेकंड स्टेज पे आ गए। जैसे जीएसटी का एक पीरियड था 7 साल जहां पर हम जीएसटी के प्रोविजंस को डिस्कस करते थे, अब हम लीगल इश्यूज को डिस्कस करने लगे। तो अब हमको जीएसटी के सेक्शन 73 में क्या होगा, 74 में क्या होगा, 74A में क्या होगा, 129 में क्या होगा, 130 में क्या होगा, पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी, 122 1A की पेनल्टी राइट है कि नहीं, पर्सनल पेनल्टी भी लग सकती है कि नहीं लग सकती, वो सारी चीजों को छोड़ के अब सेकंड स्टेज पे आना पड़ेगा। और जो ब्रेड एंड बटर है, मैं हमेशा कहता हूं अपील, हाउ टू ड्राफ्ट एन अपील, हाउ टू प्लीड एन अपील, आपकी प्लीडिंग्स क्या होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट तो क्या होगा, जो भी होएगा होएगा, डिसीजन क्या होगा, जो भी होएगा होएगा,
वो नहीं मानेगा, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी नहीं मानेगा तो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल में चले जाएंगे। लेकिन अगर प्लीडिंग्स खराब है तो ना नीचे रिलीफ मिलेगा ना ऊपर मिलेगा। एंड दैट इज द क्रक्स। आज का टॉपिक उसको कवर करेगा। लिमिटेशन मैं हमेशा कहता था, पहले भी कहता था, पुराना जमाना गया, हम नहीं हो गया, भूल गए तो भी चलता रहेगा। हमको भी डिजिटल रेवोल्यूशन में आना पड़ेगा, हमको भी आपको गूगल कैलेंडर मेंटेन करना पड़ेगा, रोज अलर्ट आए। हमने हमारे ऑफिस में कर रखा है, ऑर्डर होने के 30 डेज बाद से हर ऑल्टरनेट डे अलर्ट आती है, इसकी अपील करनी है, इसकी अपील करनी है, इसकी अपील करनी है। क्योंकि क्लाइंट तो क्लाइंट है, उसको कोई परवाह नहीं। उसके तो जिस दिन बैंक अकाउंट अटैच होता है ना, उसी दिन उसको परवाह चाहिए। उससे पहले क्लाइंट को कोई मतलब नहीं है। आप फोन करोगे, भैया अपील करनी है, हाँ सर कर देंगे, मैं आज तो शादी में जा रहा हूँ, अगले वीक आता हूँ। फिर अगले वीक में आज तो कुल्लू मनाली घूमने आ गया, अगले वीक आता हूँ। एंड दिस इज द फैक्चुअल एस्पेक्ट। इवन कॉर्पोरेट्स आर लाइक दिस। तो हमको वो क्वेश्चन रखना पड़ेगा, अलर्ट देनी पड़ेगी। और एज अ काउंसिल लास्ट पॉइंट मैं खाली बोल के जाना चाहूंगा कि आपको क्लाइंट को इंफॉर्मेशन भी आपको मेल पे देनी पड़ेगी, व्हाट्सएप मत दिया। व्हाट्सएप डिलीट हो जाता है, व्हाट्सएप डिलीट कर सकते हैं, मेल एक रिकॉर्ड है। हम एज अ काउंसिल मैं हमेशा ये कहना चाहूंगा, आप अपना बर्डन भी डिस्चार्ज करना सीखो। आपके पास अगर ऑर्डर आ गया तो आपको 1 महीने बाद उसको दो, एक स्पेसिफिक मेल बनाओ, एक फॉर्मेट बना के रख लो। डेट ऑफ ऑर्डर ये है, आपकी अपील की लिमिटेशन ये है, आपको 1 महीना पहले तक हमको संपर्क करना है। वी नीड 15 डेज टाइम टू प्रिपेयर द अपील एंड फाइल द अपील। 10% आपको जमा कराना पड़ेगा। अगर पेनल्टी की अपील है, खाली पेनल्टी की अपील है, तो उसमें क्या होगा? क्या आईटीसी से हो जाएगी जमा? कैश में। तो आपको बहुत सारी चीजें, क्योंकि जो नया अमेंडमेंट आया है 10% का, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं। आज का टॉपिक फैंटास्टिक टॉपिक है, और जो स्पीकर है मेरे ख्याल से ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, एंड यू विल लव टू हियर हिम टू कवर ऑल द पॉइंट्स। आई एम सॉरी, आई हैव टू गो इन द meeting upstairs, and I will be not getting the benefit of hearing such a learned speaker. But all the best to you, and thank you for excusing me and allowing me to go. Thank you. थैंक यू पंकज सर। विद द परमिशन ऑफ डायस, जो एड्रेसेस के कोरम था उसको हम स्किप कर रहे हैं और सीधे हम सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन पे आते हैं। आई रिक्वेस्ट स्नेह वर्मा जी कि सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करिए, फिर हम आज का सेशन शुरू करें। Good evening, respected dignitaries and learned professionals. Today, I feel very proud that for the first time I got the opportunity to introduce the important topic, proceedings of appeal before appellate authority and its compliance under GST laws in this prestigious conference, for which I wholeheartedly thank the conference organizing committee, and please forgive me if I make any mistake. I will try to keep this introduction simple and relatable so that everyone here, whether you are a business owner, a professional or a student, can easily understand and connect with it. Let me start with a simple question. Have you ever felt that a decision taken against you was completely correct, maybe in school or college or even in business? What do we do in such situations? We ask for a review and we request someone senior to recheck the decision. That is exactly what is appeal under GST. As we all know, GST has simplified many aspects of taxation, but at the same time, disputes and differences in interpretation still arises between taxpayer and the department. In such situations, the law provides us with a structured system of appeals so that justice can be ensured. An appeal is simply a way for a taxpayer to request a higher authority to review a decision passed by a lower authority. Under GST, if a person is not satisfied with an order passed by adjudicating authority, they have the right to file an appeal before the appellate authority.
Under GST law, sometimes the tax department passes order related to tax demand, penalty, refund rejection, or ITC issues. Now, it is possible that the taxpayer may not agree with that order. In such cases, the law gives a fair chance to the taxpayer to challenge that order by filing an appeal before higher authority, known as appellate authority. Now you might be thinking why this topic is so important. Because in practical life, notices and orders are very common under GST. And many times people either miss the deadline, do not follow the correct procedure, or are not aware of the compliance requirements. As a result, even a genuine case can be rejected. So, understanding this topic is not just theoretical, it is highly practical and useful for everyone dealing in GST. Let us now briefly understand what happens in the appeal process. When a person is not satisfied with an order passed by an adjudicating authority, they can file appeal before appellate authority. But this is not just about writing a letter and submitting it. There are certain important steps involved. First is the time limit. An appeal must be filed within the prescribed time, generally within 3 months from the date of communication of order. If we delay, we may lose our right to appeal. Second is the pre-deposit requirement. Before filing an appeal, the taxpayer is required to deposit the admitted tax amount and a certain percentage of the disputed tax, that is around 10%. This ensures that only serious and genuine appeals are filed. Third is proper documentation. The appeal must be filed in the prescribed format along with relevant documents, grounds of appeal, statement of facts. A small mistake or missing document can create unnecessary complications. Fourth is the hearing process. The appellate authority provides an opportunity of being heard.